Bhagavarahat Samma Sambuddho Sakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantang Sadhammang Sasanghang Ime Sakare Yatarhanaro Pitehi Abhipujayama Sadhuno Bhante Bhagava Suchiraparine Bhutopi Pachima Janatanuka Manasa Sakare Dugatapana Karabhute Patiganhatu Amhakam Digaratam Hitaya Sukhaya Arhan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Handmayam Buddhasya Bhagavato Kubhag Namakaram Karumasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handmayam Buddhanusatinayam Karumasi Tam Kopana Bhagavanta Evam Kalyana Kiti Saddho Abhugato Iti Piso Bhagava Arhan Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanna Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarati Satta Deva Manussana Buddho Bhagavati Handmayam Buddha Vigitin Karumasi Buddha Vara Antavartadi Gunabhiyuto Suddhabhinyana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanatang Kamalang Vasuro Vandamaham Tamara Sirsajinendang Buddho yo sabbhapaninam saranam khemamuttamang Athamanusatittanam vandami tam sirena Buddhasasmi dasoa Buddho me sami kissaro Buddhasam niyademi sariran jivitan chidam vandantoham Charisami Buddhaseva subodhitam nati me saranang anya Buddho me Saranam
etena sajja vajjen vaddeyam sattu sasani buddhang me vandamane yam punyam pasutam eda sabbe piyantaraya mahe suntasya tejasa कायेन वाचेन बुद्धे को कम्मं पकटमय बुद्धो पटिकनाथोच्यन्ते कालान्तरे संवरितं बुद्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितं विඤ्ඤोहीति आनन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाकाततादिगुणयोगवसेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोक्षभेदो सम्मोकुलोकपतन सदधारिधारी वन्दाम्यहं तमरं परधम्ममेतं धम्मो यो सर्वभानिनं शरणं शरणं केममुत्तमं तत्यानुसति सतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्सस्मि दासो धम्मो मे सामिकेसरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यत् धम्मो शरणं वरं एतेन सत्यवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं एदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहे सुन्तस्य तेजसा कायेन वाचया वाचेत्सा धम्मे को कम्मं पकटम धम्मो पटिकनाथोच्यन्तं कालान्तरे संवरितं धम्मे आनन्दमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटि पन्नो भगवतो सावक संघो लायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्न भगवतो संघो यदिदं चत्ता पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति आनन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपतिगुणादियुतो यो अट्टविदो हरिपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरास कायचित्तो
Vandamiham tamariyan ganam susuddham Sangoyo sabba paninam saranam kemamuttamam Tatiyana satithana vandami tam sirenam Sangasasmi daso Sango me sami kisaro Sangasaham niyademi Sariran jivitan chidang Vandantoham charisam Sangaso patipannatam Nati me saranam hanya Sango me saranam param Ete sajjavajje Vaddeyam sattu sasane Sangang me vandamane Yam punyam pasutam eda Sabbe piyantara me mahe sumtas tejasa Kain vacha chitsa Sange ko kammam pakatama Sango patiganathach Bharantare samvitam sange अब जयमंगल अट्ठ गाथा का पाठ करेंगे Connected to 6V7738 to the Sayudantam Girimekhalam mudita Ghorasasenamaram Danadidam vidhina Jitavamunindo Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Maratirekamabhiyujjita sabbaratim Ghoram panalavakamata matadhayakkam Khanti sudanta vidhina jitavamunindo Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Nalagiri Gajavaram Atimattabhutam Davaggi Chakkamasaniva Sudarunantam Nittam duseka vidhina jitvamunindo Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani Upphitta khaggamatihatha Sudarunantam Dhavanti yojana Pathangulimalavantam Iddhi visankhata Manojitavamunindo Tam tejasa bhavatu te Jayamangalani
वचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिना जितवा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सच्चं विहाय मतिसच्चकवादम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पञ्ज्ञापदीप जलितोर्जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विभुदं महिधिं पुत्रेण थेरभुजगेन समापयन्तो इद्धोपदेश विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहदिद्धि भुजगेन सुदक्षहत्थम् ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिनिधि बकाभिधानम् याणागदेन विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ये तापि बुद्ध जयमङ्गल अर्थगाथा यो वाचको दिने दिने सरते मतन्दे हित्वाननेक विविधानि चुपद्धवानि मोक्षं सुखम् अधिगमेय नरो सपङ्यो We'll now listen to discourse by Ajahn Chah titled Still Flowing Water. And it's entitled Still Flowing Water. And this is a talk that was originally published in Living Dhamma, translated by Bruce Evans, Puriso. And it was a talk that was given at Wat Tham Sang Phet during the Rains Retreat of 1981. So this was very shortly before Ajahn Chah's health collapsed. He had some kind of stroke-like event, and it was during that Rains Retreat he had to be rushed down to Bangkok, and then his health went into a slide over the next 8 or 9 months.
So this is one of the last of his Dhamma talks that was recorded. Still flowing water. Now, please pay attention, not allowing your mind to wander off after other things. Create the feeling that right now you're sitting on a mountain or in a forest somewhere, all by yourself. What do you have sitting here right now? There is body and mind. That's all. Only these two things. All that is contained within this frame sitting here now is called the body. The mind is that which is aware and is thinking at this very moment. These two things are also called nama and rupa. Nama refers to that which has no rupa or form. All thoughts and feelings, or the four mental khandhas of feeling, perception, volition and consciousness are nama. They are all formless. When the eye sees form, that form is called rupa, while the awareness is called nama. Together they are called nama and rupa, or simply body and mind. Understand that only body and mind are sitting here in this present moment, but we get these two things confused with each other. If you want peace, you must know the truth of them. The mind in its present state is still untrained. It's dirty, not clear. It's not yet the pure mind. We must train this mind further through the practice of meditation. Some people think that meditation means to sit in some special way, but in actual fact, standing, sitting, walking and reclining are all vehicles for meditation practice. You can practice at all times. Samadhi literally means the firmly established mind. To develop samadhi, you don't have to go bottling the mind up. Some people try to get peaceful by sitting quietly and having nothing disturb them at all, but that's just like being dead. The practice of samadhi is for developing wisdom and understanding. Samadhi is the firm mind, the one-pointed mind. On which point is it fixed? It's fixed on the point of balance. That's its point. But people practice meditation by trying to silence their minds. They say, I try to sit in meditation, but my mind won't be still for a minute. One instant it flies off one place, the next instant it flies off somewhere else. How can I make it stop and be still? On which point is it fixed? It's fixed on the point of balance. That's its point. But people practice meditation by trying to silence their minds. They say, I try to sit in meditation, but my mind won't be still for a minute. One instant it flies off one place, the next instant it flies off somewhere else. How can I make it stop and be still? You don't have to make it stop. That's not the point. Where there is movement is where understanding can arise. People complain, it runs off and I pull it back again, then it goes off again and I pull it back once more. So they just sit there, pulling back and forth like this. They think their minds are running all over the place, but actually it only seems like the mind is running around. For example, look at this hole here. Oh, it's so big, you say. Actually, it's not big at all. Whether or not it seems big depends on your perception of it. In fact, this hole is just the size it is, neither big nor small. But people run around after their feelings all the time. In order to meditate to find peace, you must understand what peace is. If you don't understand it, you won't be able to find it. For example, suppose today you brought a very expensive pen with you to the monastery. Now suppose that, on your way here, you put the pen in your front pocket, but later you put it in the back pocket. Now when you go to search your front pocket, it's not there. You get a fright. You get a fright because of your misunderstanding. You don't see the truth of the matter. Suffering is the result. Whether standing, walking, coming and going, you can't stop worrying about your lost pen.
Your wrong understanding causes you to suffer. Understanding wrongly causes suffering. Ah, such a shame. I only bought that pen a few days ago, and now it's lost. But then you remember, oh, of course. When I went to bathe, I put the pen in my back pocket. As soon as you remember this, you feel better again, even without seeing your pen. You see that? You're happy again, and you can stop worrying about your pen. You're sure about it now. As you're walking along, you run your hand over your back pocket, and there it is. Your mind was deceiving you all along. The worry comes from your ignorance. Now, seeing the pen, you're beyond doubt. Your worries are calmed. This sort of peace comes from seeing the cause of the problem, samudaya, the cause of suffering. As soon as you remember that the pen is in your back pocket, there is nirodha, the cessation of suffering. So you must contemplate in order to find peace. What people usually refer to as peace is simply the calming of the mind, not the calming of the defilements. The defilements are simply being temporarily subdued, just like grass covered by a rock. In 3 or 4 days, you take the rock off the grass, and in no long time, it grows up again. The grass hadn't really died, it was simply being suppressed. It's the same when sitting in meditation. The mind is calmed, but the defilements are not really calmed. Therefore, samadhi is not a sure thing. To find real peace, you must develop wisdom. Samadhi is one kind of peace, like the rock covering the grass. In a few days, you take the rock away and the grass grows up again. This is only a temporary peace. The peace of wisdom is like putting the rock down and not lifting it up, just leaving it where it is. The grass can't possibly grow again. This is real peace, the calming of the defilements, the sure peace which results from wisdom. We speak of wisdom, panya and samadhi as separate things, but in essence they are one and the same. Wisdom is the dynamic function of samadhi. Samadhi is the passive aspect of wisdom. They arise from the same place, but take different directions. They have different functions, like this mango here. A small green mango eventually grows larger and larger until it's ripe. It's the same mango, the small one, the larger one, and the ripe one, they're the same mango, but its condition changes. In Dhamma practice, one condition is called samadhi, the later condition is called panya. But in actuality, sila, samadhi and panya are all the same thing, just like the mango. In any case, in our practice, no matter what aspect you refer to, you must always begin from the mind. Do you know what the mind is? What is the mind like? What is it? Where is it? Nobody knows. All we know is that we want to go over here or over there. We want this and we want that. We feel good or we feel bad. But the mind itself seems impossible to know. What is the mind? The mind doesn't have form. That which receives impressions, both good and bad, we call mind. It's like the owner of a house. The owner stays at home while visitors come to see him. He's the one who receives the visitors. Who receives sense impressions? What is it that perceives? Who lets go of sense impressions? That's what we call mind. But people can't see it. They think themselves around in circles. What is the mind? What is the brain? Don't confuse the issue like this. What is it that receives impressions? Some impressions it likes and some it doesn't like. Who is that? Is there one who likes and dislikes? Sure there is, but you can't see it. That is what we call mind. In our practice, it isn't necessary to talk of samatha or vipassana. Just call it the practice of Dhamma. That's enough. And conduct this practice from your own mind. What is the mind? The mind is that which receives or is aware of sense impressions. With some sense impressions, there's a reaction of like. With others, the reaction of dislike. The receiver of impressions leads us into happiness the receiver of impressions leads us into happiness and suffering, right and wrong. But it doesn't have any form. We assume it to be a self, but it's really only nama dhamma. Does goodness have any form? Does evil? Do happiness and suffering have any form? You can't find them. Are they round or are they square, short or long? Can you see them? These things are nama dhamma. They can't be compared to material things. They're formless, but we know that they exist.
Therefore it's said to begin the practice by calming the mind. Put awareness into the mind. If the mind is aware, it will be at peace. Some people don't go for awareness, they just want to have peace, a kind of blanking out. So they never learn anything. If we don't have this one who knows, what is there to base our practice on? If there is no long, there is no short. If there is no right, there can be no wrong. People these days study away looking for good and evil, but that which is beyond good and evil, they know nothing of. All they know is the right and the wrong. I'm going to take only what's right. I don't want to know about the wrong. Why should I? If you try to take only what is right, in a short time, it'll go wrong again. Right leads to wrong. People keep searching among the right and the wrong. They don't try to find that which is neither right nor wrong. They study about good and evil. They search for virtue, but they know nothing of that which is beyond good and evil. They study the long and the short, but that which is neither long nor short, they know nothing of. The knife has a blade, an edge and a handle. Can you lift only the blade? Can you lift only the edge of the blade or the handle? The handle, the edge and the blade are all parts of the same knife. When you pick up the knife, you get all three parts together. In the same way, if you pick up that which is good, the bad must follow. People search for goodness and try to throw away all evil, but they don't study that which is neither good nor evil. If you don't study this, there can be no completion. If you pick up goodness, badness follows. If you pick up happiness, suffering follows. The practice of clinging to goodness and rejecting evil is the Dhamma of children. It's like a toy. Sure, it's all right. You can take just this much. If you grab onto goodness, evil will follow. The end of the path is confused. It's not so good. Take a simple example. You have children. Now suppose you want to only love them and never experience hatred. This is the thinking of one who doesn't know human nature. If you hold on to love, hatred will follow. In the same way, people decide to study the Dhamma to develop wisdom, studying good and evil as closely as possible. Now, having known good and evil, what do? They try to cling to the good, and evil follows. They didn't study that which is beyond good and evil. This is what you should study. I'm going to be like this, I'm going to be like that. But they never say, I'm not going to be anything, because there isn't really any I. This they don't study. All they want is goodness. If they attain goodness, they lose themselves in it. If things get too good, they'll start to go bad, and so people end up swinging back and forth like this. In order to calm the mind and become aware of the perceiver of sense impressions, we must observe it. Follow the one who knows. Train the mind until it is pure. How pure should you make it? If it's really pure, the mind should be above both good and evil, above even purity. It's finished. That's when the practice is finished. What people call sitting in meditation is merely a temporary kind of peace. But even in such peace, there are experiences. If an experience arises, there must be someone who knows it, who looks into it, queries it and examines it. If the mind is simply blank, then it's not so useful. You may see some people who look very restrained and think they are peaceful, but the real peace is not simply a peaceful mind. It's not the peace which says, may I be happy and never experience any suffering. With this kind of peace, eventually perfect and ownerless. Everything that we perceive is like this. When eyes, ears, nose, tongue, body and mind receive sensations, we know them, just like knowing the monkey. Then we can be at peace.
When sensations arise, know them. Why do you run after them? Sensations are uncertain. 1 minute they're one way, the next minute another. They exist dependent on change. And all of us here exist dependent on change. The breath goes out, then it must come in. It must have this change. Try only breathing in. Can you do that? Or try just breathing out without taking another in-breath. Can you do it? If there was no change like this, how long could you live for? There must be both the in-breath and the out-breath. Sensations are the same. There must be these things. If there were no sensations, you couldn't develop wisdom. If there's no wrong, there can be no right. You must be right first before you can see what's wrong, and you must understand wrong first to be right. This is how things are. For the really earnest student, the more sensations, the better. But many meditators shrink away from sensations. They don't want to deal with them. This is like the naughty schoolboy who won't go to school, won't listen to the teacher. These sensations are teaching us. When we know sensations, then we're practicing Dhamma. The peace within sensations is just like understanding the monkey here. When you understand what monkeys are like, you're no longer troubled by them. The practice of Dhamma is like this. It's not that the Dhamma is very far away. It's right with us. The Dhamma isn't about angels on high or anything like that. It's simply about us, about what we're doing right now. Observe yourself. Sometimes there's happiness, sometimes suffering, sometimes comfort, sometimes pain, sometimes love, sometimes hate. This is Dhamma. Do you see it? You should know this Dhamma. You have to read your experiences. You must know sensations before you can let them go. When you see that sensations are impermanent, you'll be untroubled by them. As soon as a sensation arises, just say to yourself, this is not a sure thing. When your mood changes, not sure. You can be at peace with these things, just like seeing the monkey and not by being bothered by it. If you know the truth of sensations, that is knowing the Dhamma. You let go of sensations, seeing that invariably they are all uncertain. What we call uncertainty here is the Buddha. The Buddha is the Dhamma. The Dhamma is the characteristic of uncertainty. Whoever sees the uncertainty of things sees the unchanging reality of things. That's what the Dhamma is like. And that is the Buddha. If you see the Dhamma, you see the Buddha. Seeing the Buddha, you see the Dhamma. If you know anicca, uncertainty, you will let go of things and not grasp onto them. You say, hey, don't break my glass. Can you prevent something that is breakable from breaking? If it doesn't break now, it'll break later on. If you don't break it, somebody else will. If someone else doesn't break it, one of the chickens will. The Buddha says to accept this. He penetrated the truth of these things, seeing that the glass is already broken. Whenever you use this glass, you should reflect that it's already broken. Do you understand this? The Buddha's understanding was like this. He saw the broken glass within the unbroken one. Whenever its time is up, it'll break. Develop this kind of understanding. Use the glass to look after it, until when one day it slips out of your hand. Smash! No problem. Why is there no problem? Because you saw its brokenness before it broke. But usually people say, I love this glass so much, may it never break. Later on the dog breaks it. I'll kill that damn dog. You hate the dog for breaking your glass. If one of your children breaks it, then you'll hate them too. Why is this? Because you've dammed yourself up. The water can't flow. You've made a dam without a spillway. The only thing the dam can do is burst, right? When you make a dam, you must make a spillway also. When the water rises right up too high, the water can flow off safely. When it's full to the brim, you open your spillway. You have to have a safety valve like this. Impermanence is the safety valve of the noble ones. If you have this safety valve, you'll be at peace. Practice constantly, standing, walking, sitting, lying down, using sati to watch over and protect the mind. This is samadhi and wisdom. They're both the same thing, but they have different aspects.
If we really see uncertainty clearly, we will see that which is certain. The certainty is that things must inevitably be this way. They cannot be otherwise. Do you understand? Knowing just this much, you can know the Buddha. You can rightly do reference to him. As long as you don't throw out the Buddha, you won't suffer. As soon as you throw out the Buddha, you'll experience suffering. As soon as you throw out the reflections on transience, imperfection and ownerlessness, you'll have suffering. If you can practice just this much, it's enough. Suffering won't arise, or if it does arise, you can settle it easily, and it'll be a cause for suffering not arising in the future. This is the end of our practice, at the point where suffering doesn't arise. Why doesn't suffering arise? Because we sorted out the cause of suffering, samudaya. For instance, if this glass were to break, you would experience suffering. We know that this glass will be a cause for suffering, so we get rid of the cause. All dhammas arise because of a cause. They must also cease because of a cause. So, if there is suffering on account of this glass here, we should let go of this cause. If we reflect beforehand that this glass is already broken, even when it hasn't, the cause ceases. When there's no longer any cause, that suffering is no longer able to exist. It ceases. This is cessation. You don't have to go beyond this point. Just this much is enough. Contemplate this in your own mind. Basically, you should all have the 5 precepts as a foundation for behavior. It's not necessary to go and study the Tipitaka. Just concentrate on the 5 precepts first. At first you'll make mistakes. When you realize it, stop, come back, and establish your precepts again. Maybe you'll go astray and make another mistake. When you realize it, re-establish yourself. Practicing like this, your sati will improve and become more consistent, just like the drops of water falling from a kettle. If we tilt the kettle just a little, the drops fall out slowly, plop, plop, plop. If we tilt the kettle up a bit more, the drops become more rapid, plop, 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 plop. If we tilt the kettle up even further, the plops go away, and the water flows into a steady stream. Where do the plops go? They don't go anywhere. They change into a steady stream of water. We have to talk about the Dhamma like this, using similes, because the Dhamma has no form. Is it square or is it round? You can't say. The only way to talk about it is through similes like this. Don't think that the Dhamma is far away from you. It lies right within you, all around. Take a look. 1 minute you're happy, the next sad, the next angry. It's all Dhamma. Look at it and understand. Whatever it is that causes suffering, you should remedy. If suffering is still there, take another look. You don't yet see clearly. If you could see clearly, you wouldn't suffer, because the cause would no longer be there. If suffering is still there, if you're still having to endure, then you're not on the right track yet. Wherever you get stuck, wherever you're suffering too much, right there, you're wrong. Whenever you're so happy you're floating in the clouds, there, wrong again. If you practice like this, you'll have sati at all times, in all postures. With sati and sampajanya, you'll know right and wrong, happiness and suffering. Knowing these things, you'll know how to deal with them. I teach meditation like this. When it's time to sit in meditation, then sit. That's not wrong. You should practice this also. But meditation is not only sitting. You must allow your mind to fully experience things, allow them to flow and consider their nature. How should you consider them? See them as transient, imperfect and ownerless. It's all uncertain. This is so beautiful, I really must have it. That's not a sure thing. I don't like this at all. Tell yourself right there, not sure. Is this true? Absolutely, no mistake. But just try taking things for real. I'm going to get this thing for sure. You've gone off the track already. Don't do this. No matter how much you like something, you should reflect that it's uncertain. Some kinds of food seem so delicious, but still you should reflect that it's not a sure thing. It may seem so sure that it's so delicious, but you must tell yourself, not sure. If you want to test out whether it's sure or not, try eating your favorite food every day, every single day, mind you. Eventually you'll complain.
this doesn't taste so good anymore. Eventually you'll think, actually, I prefer that kind of food. That's not a sure thing either. You must allow things to flow, just like the in and the out breaths. There has to be both the in-breath and the out-breath. The breathing depends on change. Everything depends on change like this. These things lie with us, nowhere else. If we no longer doubt, whether sitting, standing, walking or reclining, we'll be at peace. Samadhi isn't just sitting. Some people sit until they fall into a stupor. They might as well be dead. They can't tell north from south. Don't take it to such an extreme. If you feel sleepy, then walk, change your posture. Develop wisdom. If you're really tired, have a rest. As soon as you wake up, then continue the practice. Don't let yourself drift into a stupor. You must practice like this. Have reason, wisdom, circumspection. Start the practice with your own mind and body, seeing them as impermanent. Everything else is the same. Keep this in mind when you think the food is so delicious. You must tell yourself, not a sure thing. You have to whack it first. But usually, it just whacks you every time, doesn't it? If you don't like anything, you just suffer over it. This is how things whack us. If she likes me, I like her. They whack us again. You never get a punch in. You must see it like this. Whenever you like anything, just say to yourself, this is not a sure thing. You have to go against the grain in order to see that. You have to go against the grain somewhat in order to really see the Dhamma. Practice in all postures, sitting, standing, walking, lying. You can experience anger in any posture, right? You can be angry while walking, while sitting, while lying down. You can experience desire in any posture. So our practice must extend to all postures. Standing, walking, sitting and lying down. It must be consistent. Don't just put on a show, really do it. While sitting in meditation, some incident might arise. Before it's settled, another one comes racing in. Whenever these things come up, just tell yourself, not sure, not sure. Just whack it before it gets a chance to whack you. Now this is the important point. If you know that all things are impermanent, all your thinking will gradually unwind. When you reflect on the uncertainty of everything that passes, you'll see that all things go the same way. Whenever anything arises, all you need to say is, oh, another one. Have you ever seen flowing water? Have you ever seen still water? If your mind is peaceful, it'll be just like still flowing water. Have you ever seen still flowing water? There. You've only ever seen flowing water and still water, haven't you? But you've never seen still flowing water. Right there, right where your thinking cannot take you. Even though it's peaceful, you can develop wisdom. Your mind will be like still flowing water. Flowing, and yet it's still. It's almost as if it were still, and yet it's flowing. So I call it still flowing water. Wisdom can arise here. Here one. This is the 35th. आज के प्रवचन का अनुवाद करते हैं हिंदी में। प्रवचन का टाइटल दिया गया था स्टिल फ्लोइंग वाटर। पानी खड़ा भी है और चल भी रहा है। तो अजान
चाह ने शुरू किया अपना प्रवचन इस बात को कहते हुए कि जब आप बैठे हैं तो आपके पास क्या है, तो एक शरीर है, एक मन है। शरीर को रूप कहा जाएगा और मन को कह लीजिए नाम। रूप जो है वो इसके एक रूप है, फॉर्म है, और मन जो है वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है। और मन किसको कहा? जो हमारी सोचने की, जानने की क्षमता है। तो इस बात को हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि मन क्या है और शरीर क्या है। और हम सबके मन पूरी तरह शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं हुए। और फिर उन्होंने कहा, मुख्य बातें बता रहे हैं सिर्फ कि जो साधना है उसका मतलब सिर्फ बैठ के साधना करने का मतलब नहीं है। ध्यान सिर्फ बैठ के नहीं होता, खड़े होकर हर एक चारों पोस्चर में, बैठे, खड़े, चलते, लेटे, हर पोस्चर में ध्यान किया जा सकता है। कई बार हम समाधि का गलत अर्थ ले लेते हैं कि एक बहुत ही महीन पॉइंट पे क्या एकाग्रता बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। समाधि का मतलब है कि हमारा मन जो है एकत्र है और बैलेंस में है, क्योंकि तभी हम उससे प्रज्ञा डेवलप कर सकते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि मन एकदम चुप हो गया, होश ही नहीं है और उसमें ऐसा खो गए कि सजगता ही खत्म हो गई, तो वो सच्ची समाधि नहीं होगी। जो ऐसी समाधि नहीं है वो जिससे कि प्रज्ञा का उद्भव हो। कई लोग ने बताया, साधक कंप्लेंट करते थे, मेरा मन बहुत भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि मन उधर उधर जाता है, लेकिन वो समझते नहीं कि केवल उनका परसेप्शन है, क्योंकि उन्होंने एक अवधारणा बना ली है कि मन एकाग्र रहे, एक जगह पे बना रहे तो शांति होगी, और वही उसको उद्देश्य मान लिया साधना का। शांति जो है वो प्रज्ञा के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से आती है। पर उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए किसी ने एक पेन खरीदा है बहुत महंगा, और वो मॉनेस्ट्री आया, उसने पेन अपनी जेब में रखा था ऊपर की पॉकेट में, और जब मॉनेस्ट्री आया बैठा तो उसको लगा कि वहाँ से हटा के बैक पॉकेट में डाल दो। और जब ध्यान करके उठा और देखा, उसने उसको याद नहीं कि बैक पॉकेट में डाला है, तो सामने की पॉकेट में देखा तो पेन मिला नहीं। तो परेशान हो गया और घबराहट हो रहा है, बुरा लग रहा है, उदास हो रहा है, ढूंढने जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। और काफ़ी देर बाद अचानक उसे ख्याल आया, और मैंने पीछे की जेब में रखा था। और वो ख्याल आते ही उसको अच्छा लगने लग जाता है, और हाथ लगाया, देखा वहीं पे है, तो सारी चिंताएं, सब परेशानियां दूर हो गई। तो कैसे दूर हुई? क्योंकि जानकारी हो गई, उनकी समझ जाग गई। वो भूल अविद्या में आ गए थे कि मैंने पेन यहाँ रखा हुआ है, जबकि उसको बदल के दूसरे स्थान पर रख दिया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम, शांति जो आती है वो परेशानी का कारण, दुख का कारण जानने से आती है, और उसके निवारण के कारण आती है। जैसे ही हमें दुख का कारण हटा देते हैं तो शांति आती है, जो कि स्थायी शांति होती है। जो समाधि का अभ्यास से शांति आती है वो ऐसे है जैसे नीचे घास पड़ी हो और उसके ऊपर हमने एक पत्थर रख दिया, और थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाएगी, लेकिन पत्थर हटते ही फिर सारी घास दोबारा आ जाएगी। जबकि प्रज्ञा का अर्थ है कि हम जो डिफाइलमेंट्स हैं, जो हमारे विकार हैं, उनको हटाएंगे। केवल मन को रोक के नहीं रखेंगे, डिफाइलमेंट्स को हटा के रखेंगे, तो वो अधिक शाश्वत शांति आती है। जो कहने को कहा जाता है कि समाधि और प्रज्ञा अलग अलग है, लेकिन वो रिलेटेड है। पहले भी कई बार अजान में बता चुके हैं। फिर उन्होंने चर्चा का वही बात शुरू की कि तुम समझते हो कि मन क्या है, मन क्या काम करता है? तो उन्होंने कहा कि मन ऐसा है जैसे इस एक घर का मालिक होता है, जो भी घर में आता है उसको वो रिसीव करता है। तो इसी तरह से मन भी है वो जो कुछ भी इम्प्रेशन, सेंसेस इम्प्रेशंस बाहर सेंसेस पे आते हैं, उनको रिसीव करता है, उनको समझता है, उनको पहचानता है, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है, पसंद करता है, नहीं पसंद करता। इसका कोई रूप नहीं है, तो इसलिए हमको अनुभव के आधार पर जान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि प्रसन्नता का रूप ऐसा है और दुख का रूप ऐसा है और गुस्से का रूप ऐसा है। वो हम उनको जान सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते।
तो जब मन सजग रहे, अवेयर रहे पूरी तरह, तो उस समय जो शांति आती है वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ होती है। और अगर हमारे में ये जानने की बात नहीं है, क्षमता रखी नहीं है, हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, तो कोई शांति नहीं आएगी। सामान्य लोग यही सोचते हैं कि हमको अच्छा बनना चाहिए और जो अच्छाई है वो बुराई से बहुत ऊपर है, हमको सब अच्छे अच्छे काम ही करने चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए। लेकिन एक परिस्थिति वो समझते नहीं है कि जो अच्छा काम और बुरा काम वो दोनों में मैं का भाव जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उन दोनों से ऊपर नहीं उठेंगे तो सचमुच में मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकते। इस केवल अच्छे काम करने से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें मैं का भाव जुड़ा हुआ है। तो उदाहरण के लिए दिया, जैसे एक चाकू है, उसका हैंडल है, उसकी ब्लेड है, उसके एजेस हैं। तो अगर हम चाकू को उठाएंगे तो सारी चीज़ें साथ साथ उठेगी। इसी तरह से अगर हम अच्छाई को उठाते हैं तो उसके पीछे पीछे बुराई भी सब चलती आ जाएगी। और अच्छाई को जानने के लिए भी हमको पहले बुराई को जानना आवश्यक है। तो अगर हम सुख के पीछे दौड़ते हैं तो सुख मिल भी गया तो फिर बाद में उसके पीछे दुख ही आएगा, क्योंकि सब बदलने वाली चीज़ है। तो इस तरह का विचार कि हमको सिर्फ प्रसन्नता चाहिए, हमको सिर्फ सुख चाहिए, ये बच्चों वाली साधना है। उसका कोई बहुत अच्छा उपयोग नहीं है, वह लाभ नहीं होता। तो हमको मन के अंदर क्या जाग रहा है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, परंतु जो जानने वाला है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जानने की क्षमता है उसको अगर हम महत्व देंगे तो मन जो है, मन की जो स्थितियाँ आ रही हैं हम उससे ऊपर उठ जाएंगे और फिर किसी तरह की जो दुख का मूल कारण है कि हम मन से उलझ जाते हैं वो हट जाएगा। कई लोग इस तरह की अवधारणा बनाते हैं, वो मेरा मन हमेशा शांत रहे, कभी शांति ना हो, मैं हमेशा सुखी रहूं, कोई दुख ना आए। तो इस तरह का जो सोच है ये बच्चों वाली सोच है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनको अनित्य बोध नहीं है, समझ नहीं आई है अनित्यता की बात। अनित्यता का मतलब है कि चीज़ें निश्चित नहीं है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। फिर दोबारा समाधि की बात कहने लगे कि समाधि केवल बैठे बैठे नहीं डेवलप हो सकती, कर सकते, चलते हुए भी समाधि, किसी भी पोस्चर में हम चाहें तो समाधि का अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि कई लोग आते हैं यहाँ पे, कहते हैं ध्यान करेंगे, फिर ध्यान करने बैठते हैं, कहते हैं ओहो मेरा मन तो बहुत ही भटकता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लगता है मैंने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, तो चलो पहले मैं अपने बुरे कर्मों से निपट लूँ फिर मैं आऊँगा ध्यान करने। तो ये समझदारी की बात नहीं है। हम जब मन भटकता है तो उसी को स्टडी करने की ज़रूरत है, वही साधना है, वही धर्म है। जब मन का स्वभाव सचमुच में जानते हैं कि मन बदलता रहता है तो उधर उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती। उदाहरण फिर उन्होंने दिया, मान लीजिए किसी घर में एक बंदर है, उसने पाला हुआ है, तो बंदर को पाल के उसने अच्छी तरह देख लिया, ये बंदर शांति से कभी नहीं बैठता, वो एक डाल पे जाएगा, फिर दूसरी पे जाएगा, तीसरी पे जाएगा, तो उसको समझ में आ गया बंदर ऐसे ही होते हैं। अब वो जब मोनेस्ट्री में आता है और यहाँ बंदर देखता है, देखते हैं यहाँ के बंदर भी वैसे ही हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो एक ही बात है, क्योंकि वो बंदरों को जानता है, बंदर ऐसे ही होते हैं। अब जो आदमी बंदरों को नहीं जानता, वो पहली बार आके यहाँ बंदर देखता है, कभी इधर जा रहा है तो बहुत गुस्सा होता है, अरे क्या कर रहा है तू, और बंदर के पीछे दौड़ रहा है। तो वो क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि वो समझता है कि बंदर ऐसे ही है। हमारा मन भी ऐसा ही है, हम जब समझ जाएंगे कि मन ऐसा ही है तो सचमुच में गहन शांति होगी, फिर हमारे को मन के भटकाव हमारे को परेशान नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो शरीर के ऊपर वेदनाएं होती हैं, आँख के, कान के, नाक के अलग माध्यम से, उनको भी अगर हम समझते हैं कि कभी वो प्रिय होती हैं, कभी अप्रिय होती हैं, ये उनका स्वभाव है, तो फिर हम सिर्फ हमेशा मुझे प्रिय वेदना ही हो, मुझे प्रिय चीज़ें ही दिखे, मुझे प्रिय शब्द ही सुने, इस तरह का बचकाना व्यवहार करना से हम बच सकते हैं।
ये उसी तरह से हुआ, कोई चाहे कि मेरा सांस अंदर जा रहा है, बाहर नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो हमेशा बदलती रहेंगी, जो वेदनाएं हैं वो भी हमेशा बदलती रहेंगी, जो बाहर के विषय हैं इंद्रियों के वो बदलते रहते हैं, उनका असर अलग अलग होता रहता है। तो सचमुच में अगर हम अनित्य को, बात को ठीक से समझ जाएंगे तो धर्म को जानते हैं, और अगर धर्म को जानते हैं तो बुद्ध को जानते हैं, क्यों भगवान ने खुद कहा था, यो धम्मम जानाति सो मम जानाति। लेकिन अधिकतर लोग जो है वेदनाओं से, अपनी वेदनाओं से भागना चाहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे एक शरारती बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वेदनाओं का स्वभाव है, प्रिय होना अप्रिय होना, उसको जानना ही, उसको पढ़ना ही, उसको समझना ही साधना है। साधना का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन को रोक के रखें और कुछ ना उसमें जागे। जैसे भी हमारी वेदना हो, जैसी भी सेंस इंप्रेशंस हो, उनके सबके साथ हमारा महाभाव, मन शांत ना हो, तो सचमुच में इसका मतलब हमने मन रूपी बंदर को ठीक से समझ लिया है। ये समझ गए हैं कि मन कभी प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्रेम जागता है, कभी नफरत जागती है, ये मन का ही स्वभाव है। तो हम मन से ऊपर उठ के उसको जानते हैं, जानने वाले बनते हैं, तो फिर मन हमें परेशान नहीं करता। कभी कभी हम देखते हैं मन प्रसन्न होता है तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा साधक हो कहेगा अच्छा मन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इट्स अनित्य है, देखते हैं कब तक रहेगा। मन बेचैन हो गया तब भी कहेगा हाँ अनित्य है, देखते हैं कब तक रहेगा, ताकि वो अपना जो बैलेंस है वो बिगड़ने नहीं देता। फिर शीशे के ग्लास का उदाहरण दिया कि आप नया ग्लास लाएं तो आप हमेशा कहेंगे ध्यान से काम करो, गिरा मत देना, तोड़ मत देना। लेकिन अगर हम सचमुच में समझें कि ये शीशे का ग्लास का बचे रहना अनित्य है, ये टूट ही जाएगा, तो हम जबकि वो साबुत है तब भी हम जान सकते हैं कि ये सचमुच में टूटा हुआ ही है। तो अगर हम ये मन में इस तरह का भाव रखें तो जब वो वास्तव में टूटेगा हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें जानते हैं ये इसका स्वभाव है कि गिरेगा तो टूट ही जाएगा। लेकिन अगर हम ये बात सचमुच में नहीं जानते, इसकी तैयारी नहीं करते, तो हमेशा परेशान रहते हैं, और सच जब गिरेगा तो झगड़ा करते हैं, डांटते हैं लोगों को, अरे तुमने क्या कर दिया है। फिर जो अनित्य बोध है उसने कहा एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, हम जैसे परेशानी के कारण भर जाता है मन, तो अनित्य बोध अगर जो हो जागा होगा तो मन को ज़्यादा भरने, ज़्यादा दुखी होने नहीं देता, क्योंकि वो सबको समझा देता है कि सुख और दुख अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। फिर उन्होंने ध्यान दिलाया शील के प्रति कि 5 शीलों का पालन बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारी फाउंडेशन है, और जब भी कभी शील टूटे तो रुक जाए पहले, फिर दोबारा शील लें किसी से जाके उस अपने, और फिर दोबारा रीएस्टैब्लिश करें कि हाँ अब मैं पूरी तरह से और मेहनत से शील को पालन करूँगा। क्योंकि इस तरह से जब हम बार बार जान लेंगे शील टूट रहा है तो हमारी सत्य डेवलप होगी, और फिर बार बार अधिष्ठान करेंगे तो चित्त भी सबल हो जाएगा, सजग हो जाएगा। जीवन में जब भी परेशानी आए, जब भी हमें लगा कि हम फंस गए, अब तो हम निकल नहीं सकते, वहीं पे सचमुच में साधना करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहीं पे हमको देखना है कि कहाँ दुख हो रहा है, क्या कारण है, और उसका कैसे निवारण किया जा सके। फिर भिक्षु कह रहे थे कि कहने लगे कि भाई मैं तो ऐसी ही साधना सिखाता हूँ, मेरे हिसाब से साधना का मतलब सिर्फ बैठ के साधना करना नहीं है। साधना का मतलब है कि जो भी हमारे अनुभव हो रहे हैं हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पोस्चर में, उनको हम ठीक से समझ रहे हैं, उनके स्वभाव को जान रहे हैं, अनित्य बोध जगा रहे हैं, दुख बोध जगा रहे हैं, अनात्म बोध जगा रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझते तो साधना नहीं कर पाएंगे ठीक से। अगर आप चीज़ों को समझते हैं कि वैसी बनी रहनी चाहिए जैसी आप चाहते हैं, तो दुख ही होगा। और तो और आप अपने बहुत प्रिय भोजन को ही देख लीजिए, आपको बहुत प्रिय लगता है, आप उसको रोज़ खा के देखिए, कितने दिन तक प्रिय लगेगा।
तो ये बात जब भी आप कहें कि ये मेरा बहुत प्रिय भोजन है, तो कहिए नॉट श्योर, पक्का नहीं बात। इसी प्रकार जो आप कहते हैं कि वो मुझे पसंद करता है, ये मुझे पसंद करती है, मैं इसको अच्छा लगता करता हूँ, सब बातें अनित्य हैं। पता नहीं है किसी को भी पकड़ के रखना कि यही सत्य है और ये सर्टन है, ये धर्म के ना समझी की बात है। अगर हमें धर्म नहीं समझ आया तभी हम इस तरह की बात करते हैं। तो हर परिस्थिति में, हर पॉस्चर में राग जाग सकता है, द्वेष जाग सकता है, तो हर पॉस्चर में साधना हो सकती है। तो हमें करनी चाहिए, केवल उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, करने की बात है। तो अगर आप अनित्य बोध ठीक से जानते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। दुख जाएगा भी तो उसको तुरंत उसका निरोध भी हो जाएगा। जैसे तो फिर उन्होंने कहा क्या आपने कभी स्टिल बहता पानी देखा है? तो फिर कभी आपने खड़ा हुआ पानी देखा है? कभी चलता हुआ खड़ा पानी देखा है? स्टिल फ्लोइंग वाटर देखा है? तो कहा मन ऐसा ही था, स्वभाव है मन का कि जो गहराई से वो शांत रहता है, उसके जानने वाला जो पार्ट है वो हमेशा शांत रहता है, जबकि ऊपर ऊपर उसके मन के अंदर तरंगे बहती रहती हैं, कभी राग की, कभी द्वेष की। जब हम इस तरह से मन को जानते हैं तब सचमुच में प्रज्ञा जागती है। तो हम करुणा ब्रह्मविहार का अभ्यास करना आज। हाँ, कैसे? ये दो किताब जरा मोमी कहते हैं इसको। जरा मोमी जरा अनतीत होती। ये चश्मा देख के आप हंस रही थी ना, इसलिए कह रहा हूँ। करुणा ब्रह्मविहार उद्देश्य के दुखी को देख के जो मन में करुणा जागती है, इस भाव से कि हम उनके दुख को दूर करने में किसी प्रकार से सहायक हो सकें। डायरेक्टली नहीं हो पाते तो इनडायरेक्टली
और कुछ नहीं तो कम से कम, क्योंकि दुख अधिक प्रायः का जो भगवान का जो डेफिनेशन है वो शारीरिक कष्ट की बात अलग है। जो दूसरा हैरो आता है कि शारीरिक कष्ट से कारण हम मन पे द्वेष दुख आ जाता है, उसको संभालने में मदद कर सकते हैं क्या? दुर्भाग्य से परिस्थिति ऐसी है कि कहीं भी जाना, किसी के पास मिलना संभव नहीं है। तो जब भी कोई सूचना देता है कि हम बीमार हैं, हमारा प्रिय बीमार है, आज भी सूचना आई, एक हमारी बहन जो नागपुर से आती हैं, धम्मारामा में एक बार आई थी, उनकी नीस बहुत सख्त बीमार है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो उन्होंने कहा कि आज वो साधना में भी ज्वाइन करती है हमारी इवनिंग सेशंस में, कि हम करुणा का अभ्यास करते समय उनके प्रति भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का विचार रखें, उनके मन के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी उसमें इंक्लूड करें। पास बैठ के, बीमार के पास बैठ के ध्यान करने से चित्त, और वो अच्छा साधक है, साधिका है, तो चित्त शांत होता है। तो कम से कम टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए मन की व्यथा कम होती है, मन का दुख कम होता है। लेकिन वो परिस्थिति दुर्भाग्य से आजकल बिल्कुल नहीं है। तो जितनी क्षमता है हम सब लोग मिलके शुभेच्छा करते हैं कि उनका दुख दूर हो, उनका रोग दूर हो। और जो लाखों लोग भारत में बीमार हैं, सारे विश्व में बीमार हैं, महामारी के कारण हमारे अपने शहर में लाखों लोग बीमार हो गए हैं, तो उन सब के भी दुख दूर हो, शारीरिक कष्ट दूर हो, उसके कारण जो मानसिक परेशानियां हैं वो दूर हो। आटा-नाटी सूत्र के जो वर्सेस हैं, जो बुद्धों के पारमियों को आह्वान करके ये शुभेच्छा करते हैं कि दुखियों के दुख दूर हों, रिद्धिमान देवताओं के आह्वान करके, लोकपालों का आह्वान करके, तो आए उनका पाठ करते हैं। आटा-नाटी सूत्र के जो वर्सेस हैं, वचसा मनसा चैव वन्दामि ते तथागते, शयने आसने ठाने गमने चापि सर्वदा, सदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करातुवं, ते हितं रक्षितो सन्तो मुक्तो सर्वभयेन च, सर्वरोगविनिमुक्तो सर्वसन्तापवर्जितो, सर्ववैरमतिकन्तो निवृत्तो च त्वं भव। तेषां सच्चेन शीलेन खन्ति मेत्ताबलेन च, तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आप देखेंगे इन वर्सेस में जो वर्ड्स हैं, लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स, उनके सत्य और शील और खंति और मेत्ता के बल से, उनके अर्थात सभी जो सिद्ध पुरुष है, अरंत है,
बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, इस सब उपलब्ध उनके शील के बल से, खांति के बल से, मेत्ता के बल से, और सबसे पहला है सत्य के बल से, क्योंकि सत्य का बल बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे। सत्य क्रिया की जाती थी एक समय में कि मेरे सत्य के प्रभाव से किसी के कष्ट का दूर होती है, कि सत्य क्रिया हुआ करती थी। और अच्छे साधक कभी भी जब मन में बहुत परेशानी हो, किसी कारण से कोई द्वंद्व हो, तो सत्य क्रिया हम कर सकते हैं साधना में करते हुए कि ये कष्ट मेरे सत्य के बल से समाप्त हो। तो यहाँ पे भी वही अवधारणा है। तब देवताओं के प्रति आह्वान, पुरत्तिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महिद्धिका तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महिद्धिका तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महिद्धिका तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। उत्तरस्मिन् दिशा भागे सन्ति यक्का महिद्धिका तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। अब 4 लोकपालों के प्रति, पुरीं दिशं धतरट्ठो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरोत्तरं दिशं। चत्तारो ते महाराजा लोकपाला यशस्विनो तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महिद्धिका तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। करुणा के भाव को, करुणा की तरंगों को 10 दिशाओं में व्याप्त करने का अभ्यास करेंगे। जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो लोग इन दिशाओं में रहते हैं, उनको याद करके, जो परेशानी में हैं, बीमार हैं, किसी और कारण से दुख है, तो उनके प्रति ये शुभेच्छा कि आप सबके दुख दूर हो, आप सुरक्षित रहें। तो करुणा के भाव को व्याप्त होने देते हैं। जो जानते हैं उनके प्रति तो सहज है, फिर अनजान लोगों के प्रति, जो सारे हमारे शहर में, हमारे देश में, सारे विश्व में इस समय करोड़ों लोग बीमार हैं, तो उन सब के प्रति ये शुभेच्छा।
सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति युद्धम् अधोतीयं सब्बदि सब्बतताय सब्बावन्तं लोकं करुणा सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन परित्वा विहरति। तो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर द्वेष के, बगैर किसी वैर के हम विपुल महान असीम करुणा चित्त से सभी दिशाओं में रहने वाले प्राणियों को प्रति शुभेच्छा प्रकट करते हैं। तो एक एक करके सभी दिशाओं को स्कैन कर लेते हैं। ये भी हम याद रखते हैं कि सचमुच में दुख से मुक्ति तभी होगी जब सम्यक दृष्टि जागेगी। दुख के मूल कारण को हम पहचानेंगे, चार आर्य सत्यों को बात अंत आत्मसात होगी, तभी सचमुच में दुख से मुक्ति होगी। तो इसी शुभेच्छा में ये भी इम्प्लाइड है कि सभी प्राणी हम सब के मन में शुद्ध धर्म की बात समझ आए, दुख के समझें, दुख के कारण को समझें, उसके निवारण को समझें और उसके मार्ग को समझ के मार्ग पे चले। तो समापन करते हैं इन्हीं भावों से। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमः, मा किञ्चित् दुःखमागमः, मा किञ्चित् शोकमागमः। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन,
सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।